आमर बिट 4 होची इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस e टू द पावर 2z dz रो इंटीग्रेशन सो दैट इज इक्वल टू हम राइट कर परिवा e टू द पावर z ओवर रूट 4 माइनस e टू द पावर z रो स्क्वायर इंटू dz डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ dz अच्छा को सब्स्टिट्यूट करी सिंपल कर दले सब्स्टिट्यूट कौन करे ना पुटिंग t इज इक्वल टू e टू द पावर z ताले यार डिफरेंशिएशन करले हम लिखिबा dt बाय dz इज इक्वल टू e टू द पावर z यानी e टू द पावर z हला एक्सपोनेंशियल फंक्शन तार डेरिवेटिव से ही होबो देन dt इज इक्वल टू e to the power z dz अच्छा ये तो e to the power z और dz अच्छी ताको हम dt रे सब्स्टिट्यूट करवा ताले हमें एटे लिखवा that is equal to integration of 4 minus t square square root into dt अच्छा बर्तमान यार इंटीग्रेशन हम बर्तमान स्टार्ट करवा यार इंटीग्रेशन स्टार्ट करले प्रथम आगे दुईटा फंक्शन रो मल्टीप्लिकेशन हिसाब रे आगे देखिबा 1 into 4 minus t square square root into dt यार फर्स्ट फंक्शन हला 1 सेकंड फंक्शन सेकंड फंक्शन हला 4 minus t square square root अच्छा बर्तमान इंटीग्रेशन करवा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into second function minus integration of a first function dt into derivative of a second function that is equal to 4 minus t square square root into whole integration dt so that is equal to t square root of 4 minus t square minus integration of t into derivative of 4 minus t square 1 by 2 4 minus t square square root into minus 2t t square है minus 2t into dt so that is equal to t into square root of 4 minus t square minus integration of 2 cancel कर दले minus t square divided by 4 minus t square square root into dt आज यूजुअली आम कौन करवा इंटीग्रेशन टाको ये न्यूमरेटर 4 आ 4 को प्लस करवा माइनस करवा दैट इक्वल t स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस t स्क्वायर हाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस t स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस t स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू dt आको अलग अलग पार्ट डिवाइड कर दुईटा इंटीग्रेटेड पार्ट डिवाइड करवा दैट इज t स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस t स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस t स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू dt ए माइनस का को प्लस साइन दवा ए सॉरी माइनस का प्लस को माइनस करवा इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाय 4 minus t square square root into dt so that is equal to t square root of 4 minus t square
minus integration of 4 minus t square root into 4 minus t square root divided by 4 minus t square root into dt minus 4 integration of 1 by 2 square minus t square root into dt. So here would 4 minus t square cancel कर दो. So that is equal to t square root of 4 minus t square. अच्छा इंटीग्रेशन रहा कहते ना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर रूट इंटू डी टी माइनस 4 साइन इनवर्स एक्स बाय ए इंटू प्लस सी. अच्छा एपटे जो इंटीग्रेशन पार्ट थिला जो इंटीग्रेशन पार्ट हमर थिला जहार इंटीग्रेशन हम नै जे 4 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन एपटे अछि that implies 4 sorry integration of 4 minus t square over root dt एपटे आसला प्लस integration of 4 minus t square root into dt is equal to t square root of 4 minus t square minus 4 sin inverse t by 2 plus c. Okay, so that implies 2 integration of 4 minus t square root into dt is equal to t square root of 4 minus t square minus 4 sin inverse t by 2 plus c. अच्छा that is equal to 2 टाको सेपरेट नहीं जब इंटीग्रेशन रहा कहते हैं ना 4 minus t square root into dt is equal to t by 2 square root of 4 minus t square minus 4 by 2 sin inverse t by 2 plus c. बर्तमान t रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दवा that is equal to ये जो dt टा होची dt होची e to the power z dz. So that integration of ये जो dt रो वैल्यू टा हमको e to the power z 4 minus t square that means 4 minus e to the power 2z the square root into dz. मन पका t square जगह में e to the power 2z लिखि परिबा एवं e to the power z d 2z is equal to dt. So that is equal to e to the power z by 2 e to the power z by 2 4 minus t square को हमें हाँ t square so that is equal to 4 minus e to the power 2z रा square root minus 4 by 2 that is 2 sin inverse e to the power 2z by 2 plus c. Okay, इटा हमर हला केते नंबर 4 बिट 4 गला. अच्छा बिट 5 में देखो बिट 5 रो क्वेश्चन होची cos theta square root of 5 minus square root of 5 minus sin square theta into d theta रा integration. Okay, अच्छा
आमे गोटे काम करवा ये पुटिंग कर आगे सिंप्लीफाई कर सिंपल इंटीग्रेशन आने पुटिंग t is equal to 5 minus p is equal to sin theta तार इंटी डेरिवेटिव पार्ट dt by d theta is equal to हमको दब cos theta हेले dt हमको सब्स्टिट्यूट दब cos theta del theta तो cos theta del theta अच्छे so that is equal to integration of 5 minus t square over root dt अच्छे तापर आम या दुईटा इंटीग्रेशन पार्ट डिवाइड करवा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस टी स्क्वायर dt that implies integration of a first function 1 dt into second function 5 minus t square root minus integration of a first function into derivative of a second function 5 minus t square root whole integration that is equal to dt. So that implies integration of dt is equal to t square root of 5 minus t square minus integration of t into derivative of 5 minus t square is equal to 1 by 2 into square root of 5 minus t square into derivative of 5 minus t square is equal to 2 minus 2 t dt. That implies t square root of 5 minus t square minus integration of minus 2 cancel होगा so minus t square by square root of 5 minus t square into dt. ताला हम कौन करवा ना ये जो इंटीग्रेटेड पार्ट रे 5 प्लस करी 5 माइनस करवा that implies t square root of 5 minus t square minus integration of 5 minus t square minus 5 divided by 5 minus t square root dt. That is equal to t square root of 5 minus t square minus integration of 5 minus t square by square root of 5 minus t square into dt is minus टाइट प्लस साइन हो इंटीग्रेशन ऑफ 5 by 5 minus t square root into dt. ओके ये हूँ एक्चुअली कार इंटीग्रेशन ना इंटीग्रेशन ऑफ 5 minus t square root into dt is equal to t 5 minus t square root minus जो 5 minus t square divided by 5 minus t square root अच्छी सेटा होची इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ 5 minus t square root dt रो प्लस हमें ये जो इंटीग्रेशन 5 टा को कांस्टेंट जो बाहर को नहीं आसीबा दैट इज इक्वल 1 by root 5 रो स्क्वायर minus t square root into dt. Okay. So that is equal to integration part 5 minus t square root to dt plus integration 5 minus t square root dt is equal to t square root of 5 minus t square plus 5
sin inverse t by root 5 plus c. So that implies 2 into integration of 5 minus t square plus square root dt is equal to t square root of 5 minus t square plus 5 sin inverse t by root 5 plus c. तो t ର value substitute करवा, t होची sin theta, so that is equal to आगे substitute करिया पूर्व आगे आउ थरे 2 टाकू सेपटू नहीं जवा, एपटे into सेपटे divide हो जाओ, so that is equal to t by 2 5 minus t square root plus 5 by 2 sin inverse t by square root of 5 plus c. बर्तमान t ର value substitute कले एवं dt रो भी substitute कले, that is equal to integration of cos theta square root of 5 minus sin square theta into del theta is equal to t by 2 sin theta by 2 sin theta by 2 square root of 5 minus sin square theta plus 5 by 2 sin inverse t ର value is sin theta by root 5 plus c. एटा हला हमर क्वेश्चन नंबर बी लास्ट बीट रो आंसर. ओके.